Hello everyone, welcome to Band-Aid series of pronunciation where we discuss how to improve our pronunciation because pronunciation is very important. My name is Bharat Sir. I'm your master trainer and first of all before getting started a lot of congratulations to students जिन्होंने इस week अपना target score achieve किया है PT में, CELPIP में, IELTS में. You can see their scores as well as their names in the ticker below, and if you want you can also be here. By achieving your target score we teach you, we coach you for IELTS, PT, CELPIP. First of all, a lot of congratulations to Neha, Ramandeep, Rohit Bansal. These are students जिन्होंने इस week अपना PT में target score achieve किया है. And now let's get started with today's topic. We are your master trainers. Vanita ma'am coaches you for IELTS. Bharat Bridge, which is my name, I coach you for PT, and this is my scorecard for PT. जिन students को नहीं idea है, PT is scored from 10 to 90. 85 plus means you have got 9 bands. I have scored 90 out of 90 even in pronunciation. कैसे किया है pronunciation में भी 90? I'm going to tell you. Simple rules होते हैं, tips होती हैं, tricks होती हैं. Pronunciation is very important in IELTS. That 25% of your scores are dependent on pronunciation. Scores for speaking. PT में पूरा criteria होता है, 10 to 90 का scores आते हैं, and CELPIP में also it plays around 15% role. So yes, pronunciation is very important and today's topic is B's pronunciation. So pronunciation of B की pronunciation होती कैसे? आप सोचोगे सर इसमें क्या tough है, हमें पता ही है B की pronunciation ब की तरह होती है, but what you have to notice or you have to note down is कहीं कहीं B आपका बोला जाता है, spoken होता है, और कहीं कहीं B is silent. The more important part is B silent कहाँ होगा pronunciation में? Yes, B silent होता है pronunciation में. What is the rule? There are many rules of B. We are just covering one of those rules. So do not think कि अगर आपको एक ही रूल अभी यहाँ पे पता है, you know the complete picture, and there are multiple rules of B pronunciation. So this is just one of those rules, and our students who take coachings from us online in institute get to know the complete rules. Today's scope is just telling you that yes, with one rule also you can improve a lot for your pronunciation. So what is the rule? अब हम इस word को कैसे बोलते हैं? Bomb. B is over here. B बोला जाता है bomb में, और यहाँ पे भी हम ब को बहुत ज़्यादा stress देते हैं. So it is spoken as bomb, tomb, dumb, thumb, comb. पर क्या ये वर्ड्स ऐसे बोले जाते हैं? द आंसर इज नो. हाउ यू हैव टू प्रोनाउंस देम करेक्टली? इट विल बी बॉम्ब, टूम, डम, थम, कॉम. बी हर जगह साइलेंट होगा इन सब वर्ड्स में. सो व्हाट इज द रूल? रूल इज एम बी. कंप्यूटर से याद रखिए, स्पेस होती थी आपकी पेन ड्राइव्स जनरली, रैम जनरली पहले एम बीज में आती थी. 128 MB, 512 MB. व्हेन आई वाज अ किड 512 MB की पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा बड़ी मानी जाती थी. लाइक जनरली इट वाज 64 MB ऑल्सो. यस, टाइम्स हैव चेंज्ड और आजकल पेन ड्राइव्स भी 64 GB की आने लगी है. उस टाइम पे 64 MB की आती थी पेन ड्राइव्स. सो यू हैव टू रिमेंबर, जहाँ पे भी MB टुगेदर आएगा, देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट जहाँ पे भी MB इकट्ठा आएगा B विल बी साइलेंट ओवर देयर. सिंपल सा रूल है, बट इसको प्रैक्टिस करिए, इम्प्लीमेंट करिए सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रियलाइज ही नहीं होता जब ये हिट करती है रियलिटी की इसकी pronunciation कैसे है. सो आई एम गोइंग टू शो यू. जब आप टॉम्ब बोलोगे, हम टॉम्ब बोलते हैं, बट इसकी pronunciation क्या होती है? टूम. यू कैन हियर दिस. ओके. बॉम्ब की pronunciation क्या होती है? इट्स नॉट बॉम्ब, इट्स बॉम्ब, राइट? देन डम, not dumb. Then it is thumb, not thumb. Then it's comb, not comb. Yeah, comb. So now you know the correct pronunciations. You can also improve, and always remember this is a trophy. Trophy क्या है? आपका target score. चाहे आपको CLB 9 चाहिए हो, 8777 चाहिए हो, 79 plus चाहिए हो, PT में pronunciation is very important. If you are not following or modifying our strategies, you will not be able to get to this. But if you are following our strategies, you will be able to win this trophy. And practice is the key. आज आपको rule पता चल गया pronunciation का, B की pronunciation का. जब तक आप practice नहीं करोगे, आप अपने paper
में इसको सही pronounce नहीं कर पाओगे. So you have to make sure that you follow a system which helps you to improve your pronunciation also, and all three softwares. Yes, we coach on softwares for Marvel PTE, Marvel CellPape, and Marvel IELTS have these pronunciation exercises where you can see, where you can improve. And this is our WhatsApp number. If you have any questions or doubt, you can WhatsApp us at 8699121121. Me and my dedicated team is always there. And do not forget to subscribe to our channel because we upload such useful and knowledgeable videos almost on a daily basis. So जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, you will get a notification, and this way you can also improve your pronunciation. We give wings to your dreams.